हेलो सर। यस। सर वो मंडे को क्लास लिया तो वो इंट्रो का लेक्चर हुआ था तो आज अलग। मंडे को आप लोग का क्लास हुआ, सो आई थिंक आप आपका जो लिंक होगा, योर हम्म। क्लास इज डिफरेंट वन, राइट? दिस इज समथिंग दैट इज so now let's get some data here, right? Let me just get some data from here. So here I have some data. I just हमने ये डेटा कॉपी किया and I'll just paste this here, somewhere here, right? This is a simple tabular data, right? And right now this is very black and white. कहीं पे कुछ भी हम outline नहीं कर पा रहे हैं. This is simple black and white data with us. Now my requirement is that I just wanted to give a particular color to all these products. जितने प्रोडक्ट्स के अंदर है सबको हम एक स्पेशल कलर देना चाहते हैं, राइट? एंड हम चाहते हैं कि इस एरिया में कहीं पे भी उस प्रोडक्ट का हम नाम जब लिखे, देन दैट वुड गेट दैट पर्टिकुलर कलर. हमारे पास अभी यहाँ पे राइट नाउ वी हैव these product, unique product. I'll just give paste here and then remove the duplicate from this. To remove duplicate, we'll use Alt A and M sort key, and then I'll click OK, and that's it. So here we have only 3 item. हमने बोला कि फर्नीचर है, फर्नीचर का कलर तुम दे दो. Just give it some this color, right? And for office supplies, I'll give this color, and for technology, I'll give this color, green. Just take, no, एक ही कलर हो जाएगा. So I'll just pick some other color, right? So these are the different colors for all these category, right? अब हमें यहाँ पे एक कमांड कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, उसका यूज करना है. टू यूजिंग दैट आई विल हैव टू जस्ट गिव द स्पेसिफिक कलर ऑफ all these items available here, right? So what I'll do, I'll just select this first. जब भी हमें conditional formatting apply करना हो, in that case first we need to select the cells or entire range. Then I'll go to conditional formatting option. Conditional formatting command is available under home tab, and here under this I'll just go, and then हमें क्या है कि यहाँ पे सर्टेन वैल्यू पे, जहाँ पे वो सर्टेन वैल्यू है वहां पे हमें उसको हाईलाइट करना है. सो फॉर दैट आई जस्ट यूज हाईलाइट सेल रूट. टू एक्सेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड through keyboard, we'll use alt then h then l. Alt h and l, and then h. यदि हमें हाईलाइट करना है, then here we'll use h and अब इस केस में क्या है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट कंटेनिंग अ सर्टेन वर्ड. सो फॉर दैट हियर आई यूज टी, राइट? जैसे ही आपने टी यहाँ पे प्रेस किया, राइट, नाउ द रूल वाला जो डायलॉग बॉक्स है, हियर इट कम्स. सो व्हाट विल हैव टू, फर्नीचर के बेसिस पे हियर विल हैव टू कलर दिस कलर. सो आई जस्ट go here and then I'll go to custom, and in this way I'll go to, जैसे ही आपने कस्टम किया, नाउ फॉर्मेट सेल इज ओपन, राइट? कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज दिस. कंडीशनल फॉर्मेटिंग मींस दैट एक सर्टेन कंडीशन को जब भी मीट करेगा, जो आप क्राइटेरिया सेट करोगे, एंड जब भी उसका आउटपुट ट्रू होगा, देन एज पर कन्फिगर्ड फॉर्मेटिंग वो उस वाले सेल पे या उस एरिया पे अप्लाई हो जाएगा, राइट? जो सिलेक्टेड आपने, जिसपे आपने अप्लाई किया है उस रूल को, वहां पे अप्लाई हो जाएगा. देन I'll go here. हमें क्या करना है? I'll have to just give this fill color. So I'll go to fill color. Then I select this fill color here. I'll click OK, and
दैट्स इट। यदि हमें इसमें बॉर्डर भी ऐड करना हो, राइट, ऑन सर्टेन कंडीशन, जब भी एक सर्टेन कंडीशन मीट हो रहा है तो उस केस में यदि हमें बॉर्डर भी ऐड करना है, देन इवन वी कैन डू दैट टू। फॉर नाउ आई जस्ट क्लिक ओके एंड दैट्स इट। अब हमें सिमिलर टाइप का रूल, राइट, दो और रूल बनाना है। सिमिलर टाइप का रूल हमें दो और रूल बनाना है। सो फॉर दैट आई विल गो हियर एंड देन आई विल क्लिक एंड गो टू मैनेज रूल्स, राइट। I'll go here, instead of going in this area, I'll go to manage rule. I'll click here and then जो हमने रूल बनाया है already that rule is available, right? इसमें भी हमने क्या किया है, हमने रूल बनाया है कि एक text that containing certain, right, certain item, उसका कलर हमें एक certain कलर का देना था। So for that we have just created here and that is stored here. Now what I'll do, I'll just duplicate this rule two times, right? Because हमें दो और item है जिसके लिए हमें ये rule बनाना है। Then I'll go and edit the rule, right? And then I'll pass here value as office supplies, right? I'll just pass this value and I'll click OK. Before OK, here I'll go to format part and then I'll click OK and that's it, right? Then second, I'll go edit again and this time I'm going to take this one, technology, then format this with this color and that's it. Now we are done. I'll apply this. जैसे हमने अप्लाई किया, now this color has been applied on selected ridge. अभी हमने only fill color इसमें डाला है, so that's why here we have only these fill color. अभी आपका फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है। सपोज हमने क्या किया, आई एम जस्ट राइटिंग फर्नीचर here. जैसे ही हमने यहाँ पे फर्नीचर टाइप किया, नाउ कलर इज चेंज्ड, राइट। सो कंडीशनली जो 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 कंडीशन हम जिस कलर के लिए कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया है, कॉन्फ़िगर किया है, एज पर दैट दैट कलर इज बीइंग अप्लाइड ऑन दीज सेल्स, right? Initially this was very black and white. Now we have a certain color, or for each item in this list we have a certain color, right? या इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। Now अभी हमने जो अप्लाई किया है ओनली ऑन टेक्स्ट आइटम पे। सपोज यदि हमें इसमें ये देखना है कि सर्टेन वैल्यू है, उस पे हमें कलर कोडिंग देना है। सपोज इसमें से हमें उन सारे आइटम्स को हाईलाइट करना है जो कि 0 से कम है, राइट? सो फॉर दैट अगेन आई जस्ट गो हेयर, आई सेलेक्ट दिस, देन आई गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट, एंड देन आई गो टू either we can use new rule option, or even we can use or even we can use the cell value that is less than and or greater than something, right? So here in this case, here we'll use less than, and then we'll have to highlight all the cells having ha- has less than 0. Less than 0 means negative value, and I'll just make this format custom format. I'll click on this and then this will open a custom format for us. Then I'll go and then I'll highlight these with red, and I'm going to give a font instead of automatic. I'll just give this color, and also I'm just going to add border for this, all border for this. जब भी ये condition meet हो, then in that case apply border on in all, and that's it. Now we are done. जैसे ही जहां जहां नेगेटिव वैल्यू है, here we can see that border is applied. जो भी हमने फॉर्मेटिंग कॉन्फ़िगर किया था अभी, now that is applied on that certain certain condition. Now suppose ये numeric value है and this we want to highlight top 5 values, right? So for that also we can use conditional formatting. Then here we have top
10, top 5, whatever top n number, we can even highlight that too. I'll just go here. Then suppose I'll have to highlight only top 5 values, right? So here I'll just go and then highlight this. Then here we'll just configure a color as per our requirement. I'll just go here and then I'll say these are the top 5 top 5 items, and जहां जहां ये condition meet हो, here I just want to add border also, right? हमने यहाँ पे border भी add कर दिया. Then suppose जो font है, I just wanted to add font color something like this. Then also I want to bold this, and that's it. I'll click OK. And जैसे हमने अप्लाई किया, नाउ हियर यू कैन सी दैट जो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं एज पर जब भी रूल मेट हो रहा है, देन दैट कंडीशन, दैट एज पर दैट formatting that applies on those selected cells. Now let's move to next part. हमने suppose here we'll have to show the bottom also, right? So इसके अंदर हमारे पास top भी है, and then even we can show the bottom items too. I'll just click on this, and now my requirement is to show only the bottom 5 or 3 items. So here I'm just showing by bottom 3. Then I'll go here and then I'll go to custom format, and in this way I'm not going to change only the border part, right? Then I'll go to fill color, and for bottom one I'm just going to give some dark blue, and I'm just going to font color as white and also bold, and that's it. Now here we can see that bottom 5 here we are seeing in these color. अभी आपने देखा यहाँ पे हमने पहले इसमें एक अप लगाया था रूल, वहां पे हमने एक रूल पे ये लगाया था कि जो भी वैल्यू दैट इज लेस देन 0 उसका कलर रेड हो जाए. फिर दूसरा हमने यहाँ पे अप्लाई किया, सेकेंड रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे कि टॉप और बॉटम 5 हमें यहाँ पे लिस्ट करना है. बॉटम 5 में ये जो निगेटिव वैल्यू है, दोज आर ऑल्सो द बॉटम 5 वैल्यूज, राइट? सो दैट्स वाई जो सेकेंड टाइम हमने रूल लगाया, जो भी फॉर्मेटिंग हमने इसमें अप्लाई किया, दैट इज अप्लाइड हियर. नाउ सेलेक्ट दिस ऑल एरिया, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एंड और जितने भी रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, एवरी ऑल रूल्स आर listed here, right? Now what I want, I'll just go and and remove this rule, right? Bottom 5 वाला जो था, I'll just delete this one, right? जैसे हमने डिलीट किया, देन आई अप्लाई. नाउ यू कैन सी दैट जो पहले हमने अप्लाई किया था वो फिर से यहाँ पे लग गया. सो समटाइम व्हाट हैपेंस, जब सेम सेल पे दो यदि रूल लग रहे हो, एंड इन दैट केस जो बाद में आपने अप्लाई किया है, दैट अप्लाइड ऑन द सेल्स, राइट? एंड पहले वाला जो है उसको ओवरराइट कर देता है, पहले वाले को ओवरराइट कर देता है जब सेकंड टाइम सेम सेल पे यदि दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो तो. So in this way we can use conditional formatting to highlight cells as per when it meet to certain condition. Now I'll just use the same data, I'll copy this, and then here, then sorry, I'll paste only the value here, and I'm just going to apply the border also to make this beautiful. I'll apply here a color, right? Now what I'm going to do, अभी तक हमने देखा कि एक सेल्स को अप्लाई कर रहे हो आप, या फिर एक सर्टेन वैल्यू है उसको हम उस पे हम एक कलर दे रहे हैं, बट इवन यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इवन वी कैन इंसर्ट द ग्रा द bar inside this these cells also as per value. So for that here we have the data bars option. I'll just go here and then I'll pick, either we can use the gradient filled data bars,
or we can get the solid data bars. जैसे हमने यहाँ पे select किया as per the value available in this these cells, here you can see all the data bars are available here, right? Cell के अंदर ही ये data bars आपका insert हो गया, and now this can just here we can see that. Suppose यहाँ पे only हमें यदि data bars ही cell में देखना है, right? If you are interested to see only the data bars in the cell, values हमें नहीं देखना है, so for that I'll go to conditional formatting. Then again we'll go to manage rule, and under manage rule I'll go and then edit this. And here we can see that here we have a checkbox. जैसे हम इस checkbox को click करेंगे, then I'll just apply OK, and that's it. जैसे ही apply करोगे, now here you can see only we have the bar in these cells, right? But this is not favorable. जब ये कभी भी इस तरीके से नहीं हमें करना है. यदि हमें इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी ये दिस विल मेक सेंस, अदरवाइज देयर आर नो यूज ऑफ दिस. इसको देख के कोई ज्यादा इसको पे ज्यादा वो एनालाइज नहीं कर पाएगा, इस ज्यादा सेंस नहीं बनाएगा ये. आइदर अदर वे इज दैट, या एक सेल में आप इस तरीके से बना लो एंड इसके अगेंस्ट यहाँ पे वैल्यू डाल दो, राइट? तो दैट विल आल्सो अदर वे टू यूज दिस ऑप्शन. I'll just uncheck this here. Then suppose here we have the fill color, right? So solid fill color, यदि हमें color change करना है bar का, then here, from here even we can change the color, and as per our requirement we can just give a color. Suppose हमें border add करना है, I'll just add a border also for this. Suppose I'm just giving a yellow border, and then that's it. Okay, I'll just click OK, and then I'll pass here apply, and that's it. Now we are done, and here we have the border. So in this way, right, even we can create bar in excel cells as per value. अभी ये maximum value है, so that's why this bar is longer one, right? जैसे हमने ये वाला जो value है, this is negative one, so that's why the color of bar is negative. I'll just go here and then I'll update a value, something like instead of the negative I'll just change this to positive, and see जैसे हमने इसको positive में change किया, now here you can see that there are no value in this area, right? इस negative में बहुत कम ही दिख रहा है हमें, right? Here we can see that all are in positive area. ये जो negative है I'll just change this to positive also, and also I'll just change this to positive too, right? And in this way here we can see that as per value जितना value है उसके according the size of your bar will vary, right? This is the maximum one, so that's why it's filled one, filled. Otherwise यदि जहां जहां इसके आसपास है, जैसे ये वैल्यू है इसके आसपास है, थोड़ा सा यहाँ पे अनफिल्ड है. So in this way even we can insert bar in cells, right, as per value available in it. Next here second part is हमने इसको select किया, then I'll go to conditional formatting, and then here we have color scale, right? Suppose हमारे numeric value है and we'll have to show the same on color scale, so even we can show the same in color scale, so that values can be outlined maximum to minimum value, anyone can see. And as per color, no color coding, anyone can identify that which one is the maximum and which one is the minimum value, and that's it. Now let's move to next part, and here we have icon set, and in this icon set here we have different icons, and as per our requirement here we can add choose any icon. यदि हमें डेटा कोई इस तरीके का डेटा शो कर रहे हैं where we are just trying to show the progress, right? So in that case even we can use directional data. यदि हमें only status शो करना है, right, so in that case we can use these shapes, right, traffic lights and all. यदि हमें error show करना है, whether the improvement there are improvement or not, or if we'll have to just highlight the something that should not be in our data, in that case we can use indicators. If we'll have to add
use add any flag and all, in that case we'll use indicator. यदि हमारे पास rating का data है, then we can use the rating here, and in this way we can use conditional formatting options to add more flexibility or more value in our data, right? अभी यही डेटा था सिंपल, यदि हम इसको रखते, इसमें कहीं कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं करते, then this was normal data. But now here we have applied conditional formatting, and we have also used here the data bars option, icon set option, and now this is something here we can add more value in our data, and even we can outline the particular cells as per its value available in it. Now I'll go to again conditional formatting option, then I'll go to manage rule में जाएंगे and then here we'll edit this icon set, right? अभी icons यहाँ पे भी यदि आपको only icons देखना है, then even we can just see only icon, इसको चेक कर देंगे, then you will see only icon, not the value available in it, right? Also जो order है, if you want to reverse the icon order, then even you can do that too, right? हमने यहाँ पे icon order है उसको reverse कर दिया, and then that can be done, right? I'll just apply this, and then here you can see that I order of icon is reversed, and now here we have the values icon set available in this. Now let's move to other part, how we can use the formula, Excel formula in to apply the conditional formatting and all. I'll just use the same data set. I'll use here, I'll not use the formatting, हम इसको format कर लेते हैं for us only. I'll add a header color here, and that's it. Now what we want that इसमें जहां पे भी value इन सब में जहां पे भी वैल्यू इज मोर देन एवरेज, राइट, और लेस देन एवरेज, इसका जो एवरेज है, राइट, इसका जो एवरेज है उससे जहां पे भी वैल्यू कम है, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द इंटायर रो, पूरे रो को हमें हाईलाइट करना है जहां पे भी जो प्रॉफिट है उसका एवरेज एवरेज प्रॉफिट से कम है वैल्यू. So suppose here average profit is, I'll just pass here and get the average here, average is, I'll use the average formula, and here average is this one. अब इसमें जहां पे भी इस नंबर से वैल्यू कम है, I will have to highlight the entire cell, राइट? मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने किसी सेल में ये वैल्यू डाल दिया, एंड देन आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द इंटायर सेल. हमने इसको सेलेक्ट किया, देन आई जस्ट गो हियर, राइट, एंड हमने यही वाला जो फॉर्मूला अभी अप्लाई किया है हमने, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. आई विल गो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन आई विल गो टू न्यू रूल, राइट, एंड हमें जो सेल है, प्रॉफिट है, सम ऑफ प्रॉफिट है सेल, उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो फॉर दैट हियर आई यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट. Then for that I'll just go here, then here I'll type average, right, and then I'll apply these inside here, and then I'll just format, and then I'll just go here, I'll click OK, and then I'll click OK. सो अभी जैसे हमने इस पे अप्लाई किया, राइट, नाउ हियर यू कैन सी दैट ये इसने क्या किया, इंटायर जो डेटा सेट है उन सबको इसने उन सबको इसने उन सब पे अप्लाई कर दिया इसने, राइट. सब जितने भी था सबको इसने जो कलर हमने फॉर्मेट किया था वो कर दिया था. बट माई रिक्वायरमेंट इज ओनली दैट ये सिर्फ
उसी को करे, आई जस्ट से हियर, आई से दिस दिस इज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ, राइट, इंटायर डेटा सेट। यदि ये ट्रू हो तभी ये अप्लाई हो, बट हियर इट इज फॉल्स। आई जस्ट फिक्स दिस। So what will happen, this will work on in this way, right? अब यहाँ पे जहां जहां ट्रू है हम चाहते हैं कि सिर्फ उसी को उसी वही रो ओनली हाईलाइट हो, और दूसरा कोई भी रो इसमें हाईलाइट ना हो। सो हेयर वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला इंस्टेड जस्ट यूजिंग एवरेज वन। हमने यहाँ पे क्या किया है, ओनली हमने यहाँ पे एवरेज यूज किया है, बट हमने यहाँ पे कंपेयर नहीं किया। सो व्हाट इज हैपन, so what has happened here, इसने क्या किया, जस्ट इट हैज कंसीडर्ड ऑल एज ट्रू, एंड नाउ इट हैज अप्लाइड दिस दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने फॉर्मेट किया था एज पर कंडीशन इन ऑल सेल्स, राइट। बट दिस शुड ओनली अप्लाइड दिस वन where we have true value. So for that I'll go to conditional formatting again, then I'll go to manage rule, and I'll go here, then I'll edit this, and I'll say this is less than this one, right? And इसमें हमें अभी के लिए हम इसको देखते हैं पूरी तरीके से रिलेटिव रेफरेंसिंग में रख के। देन I'll click OK, and then I'll apply the condition, right? अब जब हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, देन हियर वी कैन सी दैट जो फर्स्ट वाला सेल है, राइट, दैट वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेक्टली अप्लाई हो गया, जहां जहां ट्रू है ओनली वहीं पे उसमें लगा है, राइट, वहीं पे अप्लाई हुआ है कलर। बट बट ये जो सेकेंड वाला है वहां पे भी पूरी जितने भी सेल्स हैं सब में अप्लाई हो गया है, एंड ऑन दिस वन ऑल्सो इट हैज अप्लाइड करेक्टली ऑन ऑल, राइट, सेल्स। सो व्हाट आई जस्ट वांट दैट ये पूरे सेल्स को पिक करे, पूरे जितने भी जहां भी ट्रू हो रहा है ये सारे के सारे सेल्स इंटायर रो को ये हाईलाइट करे, इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग दीज टू, राइट। सो यहाँ पे इशू ये है, सपोज अभी आपने जो फॉर्मूला लगाया है दैट इज समथिंग लाइक दिस वन, राइट, यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अभी लगाया है। अभी इसी को हम मूव करेंगे राइट साइड, राइट। सो ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो कंडीशन है ये इस पे अप्लाई हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग परफेक्टली। बट सपोज इसी को हम राइट साइड जब मूव करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, कंट्रोल एंड आर, राइट। अब देखो जैसे हमने राइट साइड मूव किया हर एक पे ट्रू ट्रू आ रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज अप्लाइंग और ट्रू ऑन ऑल, राइट। सो बट व्हाट आई वांट, ये जो अप्लाई हो जहां पे ट्रू आ रहा है, एक्चुअल में ट्रू आ रहा है, उसी वाले रो को अप्लाई करे, सबको अप्लाई, ये सब पे ये अप्लाई ना करे। सो फॉर दैट हियर वी नीड टू सेट इट्स रेफरेंसिंग, राइट। हमें इसका कॉलम फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज हियर वी हैव सिंगल कॉलम, एंड इसी के रिजल्ट को हम मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर रहे हैं। सो हियर वी नीड टू फिक्स इट्स कॉलम, हमने इसके कॉलम को फिक्स कर दिया। देन आई जस्ट ड्रैग दिस डाउन हियर, कंट्रोल डी, एंड देन I'll just do the same thing, control and R। अब इसमें देखो कि सेम रिजल्ट आ रहा है, ट्रू जहां पे है सब पे ट्रू है, जहां पे फॉल्स है सब पे फॉल्स है, राइट। नाउ इफ आई अप्लाई द सेम थिंग ऑन दिस एरिया, तो फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है दैट विल perfectly covered। I'll just go here, then I'll just manage the rule, go to manage rule, I'll go here, I'll edit this, then I'll fix its column, because ये सिंगल कॉलम है और यही रूल मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई हो रहा है, सिमिलर टू जब जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं मल्टीपल रोज पे, राइट, जिस तरीके से रेफरेंसिंग कॉलम का फिक्स करते हैं उसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब आप अप्लाई करोगे, देयर आल्सो यू नीड टू फिक्स इट्स करेक्ट
to apply, to set its correct referencing also. I'll just set this, then I'll click OK, and then I'll apply this. Now here you can see that it has applied conditional formatting on correct cells only, right? So in this way, we can use conditional formatting even on multiple cells, right? We can apply the conditional formatting on certain value available in the cell, right? Then even values or numeric value available in the cell, or we can even insert the data bars, icon set, right? Color scales, right? Let me just insert here color scale. I'll go here, then here I'll insert a color scale to outline the data set. Then even we can use the any particular cell value to apply the conditional formatting on entire data set, right? So in this way we can use conditional formatting option to just create, just to outline your data and make that representable, राइट। अब इस तरीके से हम यदि कलर एक ब्लैक एंड व्हाइट रिपोर्ट देंगे एंड एक कलरफुल रिपोर्ट देंगे, देन दैट मेक मोर डिफरेंस, राइट। एंड यहाँ पे यूजर को यहाँ पे देख पाएगा कि कौन सा सेल है, किस आइटम का हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सो हियर यू कैन सी दैट इस तरीके से यहाँ पे एनीवन कैन सी दैट ऑफिस सप्लाई में बाइंडर्स एंड बाइंडर्स एसेसरीज जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला प्रोडक्ट है, राइट। Now let's move to next part, and then here we'll cover the pivot table, right? Let me just pick some data from here. Here we have the data. So here I have some data. I'll just copy this and then I'll paste this data here. Okay, so now what I want, I'll have to create here a pivot table. इसमें हमारे पास दो columns हैं जिसमें कि date का data available है. Here we have the order date and another one is the ship date, but its format is not correct. So for that I'll just format this first. Control and one, go to system, custom, sorry, and I'll use M, triple M and YY, and also I'll use the same format for this one. I'll press F4 and that's it. Now अब हमारे पास this is the data set and इसका use करके we'll have to quickly analyze the certain thing here, right? So just to quickly analyze values, right, we use pivot table. Suppose अभी इसमें हमें total sales निकालना है, right, on on the as per priority and also as per ship mode, right? So for that, here even we can do that too, but using formula. Let me just show you. हमारे पास यहाँ पे priority है, right? I'll just go here, I'll remove the duplicates and I'll say my data has header. So this is your different order priority. Then also I'll have to get the information as per zip mode. I'll copy this and then I'll paste here and remove the duplicates one. Then here we have three items only, zip mode. I'll just copy this and I'll paste it here, E, and then that's it. Suppose अब यहाँ पे हमें different order priority है, right? And different order priority के basis पे जो different ship mode है उसके against total order amount क्या है, right? या sales amount क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, here we have sales, yes. So ये जो different, ये जो combination है इसके against
सेल्स अमाउंट, टोटल सेल्स अमाउंट क्या है, वी जस्ट नीड अ समरी फॉर दैट। अब इसके लिए हमें यहाँ पे एक्सेल का जो फॉर्मूला हमने लर्न किया है उसका यूज करना पड़ेगा, राइट। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, जस्ट टू फिल दिस टेबल, हियर वी नीड सेल्स। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे गाइस? सर वी लुकअप। वैल्यू कब से कैसे आएगा, हमें यहाँ पे सम चाहिए, सेल्स चाहिए, लो एंड रेगुलर के बेसिस पे, लो एंड रेगुलर है उसके बेसिस पे हमें सेल्स चाहिए, राइट। ये सेल्स जो है इसमें से इसका समराइज चाहिए वैल्यू। सो फॉर दैट वील यूज सम इफ्स, सम। राइट। सम इफ्स, सम इफ्स, बिकॉज यहाँ पे आपके क्राइटेरिया दो हैं, एक क्राइटेरिया इज ऑर्डर प्रायोरिटी लो, दूसरी क्राइटेरिया इज शिप मोड जहाँ पे रेगुलर ईयर है, राइट। सो हियर वी हैव टू क्राइटेरिया, सो दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहले पैरामीटर है दैट इज सम रेंज, हियर we'll pass the sum range first, so this is your sum range, then I'll press F4, and next criteria range 1, so I'll just pass the criteria range 1 as order priority here, राइट। हमने सम F2 से किया है, सो दिस विल आल्सो विल पास फ्रॉम F2, क्राइटेरिया भी हमें F2 से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो जब भी हम सम इफ और सम इफ्स और काउंट इफ्स का यूज करें तो उसका हाइट हमेशा स्टार्टिंग जो हम दे ले रहे हैं दैट शुड बी सेम, राइट। आपके डेटा का हाइट सेम होना चाहिए, अदरवाइज दिस विल नॉट गिव यू द करेक्ट रिजल्ट। I'll press F4, then the criteria is this one, because हमें मल्टीपल कॉलम में इसे मूव करना है, so for that I'll just fix its column, then next criteria 2, here we have the criteria 2, I'll just pass this from here to, I'll just press F4, then criteria 2 is your this one, right। and इस केस में हमें इसको मल्टीपल रोज में पॉपुलेट करवाना है, so for that I'll just fix it row, and criteria जो आपका सिंगल रो में है, I'll just press here, and now here we have the summarized information as per different values। अब हमें यहाँ पे आए क्या, ओके, D2, राइट, D2, अब इसको हमने फिक्स नहीं किया, so that's why it is not working fine। I'll just press Control R and then Control D। Now here we have summarized information as per order priority and right ship mode। इसको करने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा है, right। But even we can do the same thing using pivot table in very in quickly। So what I'll do, I'll just select this entire data set. To create a pivot table, select your entire data set, then press Alt in your system and go to Insert tab. So to go Insert tab, I'll use N short key. Then next here we have V and then T. Alt N V T। Then जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, this pivot table form will open। देन यदि हमें सेम सीट में जिसमें आपका डेटा है उसी में पाइवट टेबल क्रिएट करना है, देन विल यूज एग्जिस्टिंग वर्कशीट, राइट। या फिर किसी और सीट में आपके पास ऑलरेडी जो सीट अवेलेबल है उसमें यदि क्रिएट करना है, देन यू कैन यूज एग्जिस्टिंग सीट, और यू कैन यूज न्यू वर्कशीट यदि आपको पाइवट टेबल न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है, इन दैट केस। देन आई फॉर नाउ आई जस्ट सिलेक्ट न्यू वर्कशीट, देन आई क्लिक ओके, एंड दैट्स इट। अब हम न्यू वर्कशीट में आ गए। now my here in pivot table, here we can see that here we have different options, let me just hide। so here we have the pivot table analyze, and second option is design। अब pivot table का जैसे हमने यहाँ पे देखा, this is your field list, जितने भी columns अवेलेबल है आपके data set में, all columns are available here। now my requirement is to create a summary view as per order priority, right। so just I'm wanted to
add order priority in rows, सारे order priority, unique order priority here listed. Then I want ship mode in column, right? जो टेबल हमने अभी क्रिएट किया था उसी टाइप का टेबल यहाँ पे बन रहा है धीरे धीरे. Then I just wanted to see the total sales, right? And now here we have information, just few clicks, few drag and drop, and now the summarized information is available using pivot table, right? Again, what I want to create more report, right? So what I'll do, I'll just go here, copy this, इसी pivot table को हमने यहाँ पे copy किया, and then I'll insert here, right? Now जैसे ही आप pivot table copy करोगे, paste करोगे, here you can see other pivot table analyze, then go to feed list, right? And here I'm going to remove this, right? Ship mode ये सारा कुछ हमने हटा दिया. Then I'm going to add two things. One is the category, right? Then product subcategory and its sales, and then also I'm going to add the its uh, profit, profit and unit price, shipping cost, and all the information we have added here. Now here we can see जो ये जो इंफॉर्मेशन हम ऐड करते गए हैं, जो भी आपके आइटम्स वाले थे, फर्नीचर जो टेक्स्ट वाला आइटम था, दैट इज अंडर दिस प्लस माइनस साइन के साथ ये हायरार्की में ऐड हो गया. बट व्हाट आई जस्ट वांटेड टू convert this in tabular form, and even I just wanted to see the column of all the item available in this. So for that I'll go to pivot table analyze, then I'll click on option, then go to display. Here we have classic pivot table layout. I'll click OK. Now जैसे आपने इस पे क्लिक किया, now here you can see ये टेबल में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. नाउ जितने भी आपके कॉलम्स आपने ऐड किए थे, सबका कॉलम यहाँ पे दिख रहा है, फील्ड नेम हमें यहाँ पे दिख रहा है. Now what I don't want to see the subtotal here, right? So for that, again I'll go to design mode, then here we have the subtotal. I'll click do not show subtotal. Now here we have more concise information. Now अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी में देख रहे हैं कि there are some lines are blank, but my requirement is that I don't want to see any blanks here, right? So for that, again I'll go to design, then I'll go to report layout, and then here I'll click on repeat all label item. I'll click, and then that's it. Now we are done. So in this way, what we can do, even we can customize the pivot table too. And इसमें हमने very quickly we have just created a summarized information using pivot table. Pivot table is a tool using that we can analyze any big data in very quickly, right? So जितना भी बड़ा data है, we can see the tables, items available in that, and we can create the data in no times, right? Now अब हमने ये जो item create किया है, now what I just wanted to just slice this data, right? Filter out this data. So again go to pivot table analyze, then here we have two options. Either we can filter out data with certain items. Suppose यदि हमें order priority है, उसके basis पे इसको filter करना है. So for that either we can use filter option or we can use the slicer option. I'll just pick this one, order priority filter. जैसे हमने filter यहाँ पे add किया, now this is added here, and even we can filter out this in this way, right? Suppose यदि हमें filter करना है इसे, only we are interested to see the high order जिसकी order priority high थी, उसका information हमें देखना है, then we can filter out using high, right? Second method is that what we can do, I'll just click on this, then I'll go to pivot table analyze. Here we have two things. One is slicer and other one is timeline. So suppose यदि हमें अपने डेटा को filter करना है on using slicer, then we can use the slicer option. जैसे ही slicer पे click करोगे,
all the field available in your data set will appear here, right? यदि हमें सिप मोड के बेसिस पे इसको फिल्टर करना है, then also I just wanted to filter this on certain certain things. Suppose रीजन के बेसिस पे हमें फिल्टर करना है, I'll just create slicer for these two field, zip mode and हमने यहाँ पे region को select कर लिया. I'll click OK and that's it. Region में जितने भी item होंगे, unique item, all will be listed in slicer. And also here in zip mode also all the unique item is listed. I'll go and then click here. Suppose हमने 3 यहाँ पे click किया and now column हमने slicer का 3 बनाया. I'll just make this available here. This is a floating object, so even we can customize this or move this anywhere as per our requirement. I'll just adjust this and then here we have the item, right? हमने इसको customize कर लिया, right? Now here we can filter out this zip mode. हमने only delivery रख दिया, so now here we can see here we have the delivery truck information only. Delivery truck में जो different category and सब category के product गए high priority पे, now here we are seeing information for only this. यदि इसी में से यदि हमें certain region का देखना है, then even we can do that too. जिसको filter कर रहे हैं as per that it is working fine. अभी हम इसमें देख रहे हैं कि जब एक एक को filter कर रहे हैं, एक ही filter हो रहा है, it is not selecting multiple item. But suppose यदि हमें multiple regions को select करना है, राइट, या तो ये क्या हो रहा है कि सारे के सारे सेलेक्टेड हो रहे हैं, या फिर हम किसी एक पे क्लिक कर रहे हैं देन द सिंगल आइटम इज सेलेक्टेड, बट माय आई वांट दैट ये मल्टीपल स्लाइसर सेलेक्ट हो. सो फॉर दैट हियर दिस इज योर मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन. सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस. नाउ जैसे हमने इसमें क्लिक किया, नाउ एक सिलेक्टेड ऑलरेडी है, आई क्लिक ऑन दिस. नाउ हियर इट हैज सेलेक्टेड द सेकंड also. I'll click on this, then it has selected this one also. So if our requirement is such that हमें multiple combinations को select करना है, कुछ को select करना है and कुछ को unselect करना है, right? In slicer, so in that case here we can use the multi select option. इसको click कर दोगे, then I'll just click on this. Now this is single select. I'll click here and now as is selected तो single होगा, otherwise all would be selected, right? But if your requirement is different and you wanted to select the multiple item in one go, so for that you can make this multi select and here we have the option, right? And in this way even we can select the multi using slicer. Now this is slicer. Now next move to next slicing part, that is insert timeline. So यदि आपके data set में कोई डेट फील्ड है ऑलरेडी एंड you'll have to filter your data, slice your data as per that date field, then even you can do that too. Suppose हमारे डेटा सेट में दो आइटम है जो कि डेट फील्ड से रिलेटेड है, वन इज शिप डेट एंड अदर वन इज ऑर्डर डेट, राइट? सो हमने यहाँ पे ऑर्डर डेट को पिक किया एंड देन दैट्स इट. नाउ हियर this is also even we can just format this to, suppose हमें एक particular year से डेटा को फिल्टर करना है, so here we have different options available. यदि आपको ईयर से फिल्टर करना है, ईयर वाइज डेटा को फिल्टर करना है, if you are interested to only see the 2011 data, so even you can do that. And now here we can see ईयर का ही डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है. Similarly यदि आपको एक पर्टिकुलर क्वार्टर का डेटा देखना है ईयर वाइज, so even you can do that too, राइट? एंड यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर क्वार्टर, पर्टिकुलर ईयर का, पर्टिकुलर क्वार्टर का डेटा हम फिल्टर आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस. और बाय डिफॉल्ट जब भी हम टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मंथ पे रहता है, ईयर इंफॉर्मेशन एंड देन मंथ, राइट? ये मल्टीपल ईयर का डेटा है, देन हियर वी कैन सी द मंथली एंड ईयर इंफॉर्मेशन बोथ टुगेदर. जिस भी ईयर का, जिस भी मंथ का डेटा हमें सिलेक्ट करना है और फिल्टर करना है, इवन वी कैन सेलेक्ट एंड फिल्टर दैट यूजिंग टाइमलाइन टू. नाउ अभी हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, राइट, दैट इज ओनली अप्लाइंग ऑन दिस वन, राइट? ऊपर वाला जो डेटा है उसको चेंज नहीं कर रहा है. सपोज हमने यहाँ पे डिलीवरी ट्रक किया, नाउ हियर यू कैन सी
इसको इसके इसके सेल्स को इसने चेंज किया, बट इस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ. सो दिस इज बिकॉज आई जस्ट गो हेयर एंड स्लाइसर के टैब पे जाएंगे एंड देन here we'll go to report connection. एंड इन रिपोर्ट कनेक्शन here we can see that इसका जो कनेक्शन है ओनली इन पाइवट टेबल 2. ये पाइवट टेबल 1 है, इसके साथ इसका स्लाइसर का कनेक्शन नहीं है. बट इफ यू वांट दैट, जब भी स्लाइसर को यूजर सेलेक्ट करे या स्लाइस करे, इन दैट केस ये इस पे भी इम्पैक्ट करे. सो फॉर दैट गो हियर एंड सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ओके. नाउ दिस विल स्टार्ट स्लाइसिंग दैट टू. राइट नाउ हियर यू कैन सी ये उसको भी स्लाइस कर रहा है. जो भी आप सिप मोड सेलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ वही यहाँ पे हमें दिख रहा है. यदि हम ऑल सेलेक्ट कर रहे हैं देन ऑल. सिमिलरली इस केस में भी सेम वही केस हो रहा है. इसको फिल्टर ये नहीं कर रहा है अभी भी. राइट. तो सपोज इफ यू वांट दैट ये इस पे भी वर्क करे, सो फॉर दैट आई जस्ट नीड टू go to report connection and then I'll have to check this table too. I'll click OK and then now जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, now this is working for that too. उसके नंबर भी कम हो रहे हैं. राइट. और वेरी कर रहे हैं एज पर द सिलेक्शन. I'll remove this. Now here we have similarly timeline का भी कनेक्शन उसी तरीके से होता है. I'll just go to timeline, then here you have option go to report connection and again just check on this. Right, if you want that ये timeline इन दोनों पे work करे, so for that just connect this timeline with that pivot table too. Right, and in this way here we can create a pivot table in Excel. Now let's move to next part quickly. जब pivot table आपने create कर लिया, then on the basis of that pivot table even you can create a pivot chart too. I'll just copy this pivot table and for pivot chart here I'll just copy and paste here. Right, I'll go to pivot table, then here we have critical. I'll go to pivot chart here. Right, and let's see here we have 3 item in delivery truck medium and yes. So what I'll do here, I'll just use this chart option. Right, I'll click OK and quickly here we can see here we have the chart information. Right, for critical here we have the number, for regular air and for also here we have different delivery modes. Right, ship mode, and in these different ship modes sales amount we can represent in on chart also. Right, and quickly we can just create a pivot chart here. अब ये जो chart है this can be just rendered using these timelines and slicers also. Right, here you can see this is rendering as per this one. Now let's move to next part and that is the very important one, that is power pivot. Right, so in your Excel power pivot is not the by default feature. Right, so power type pivot को अपने Excel में ऐड करने के लिए first you need to go to files. Right, and go to files, then go to option. Right, and ये जो power pivot है that is add-in. Right, and inactive add, and generally ये क्या होता है as a inactive add-ins available होता है आपके Excel में. Right, so first go to add-ins. Right, click on add-ins. Right, it is loading. It will take some time to load. Okay, so here we have, so power pivot जो होता है that is in inactive application add-ins. यहीं पे कहीं पे जैसे पावर मैप्स आपका है इसी तरीके से ये यहाँ पे रहता है. Power pivot is a its type is com add-ins. Right, so just to add this go here and then first select the power pivot, then select com add-ins, then click go. जैसे ही इस पे क्लिक करोगे go, जो भी कॉम वाले हैं यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. राइट, एंड देन check the power pivot for Excel
then click OK, and then that's it. इतना करने के बाद that will be added in your Excel, right? Then click here, एंड इन आवर फर्स्ट क्लास हमने लर्न किया था, देखा था कि एक्सेल का एक लिमिटेशन है। इन सिंगल एक्सेल सीट वी कैन अपलोड डेटा अप टू 10,48,576 रोज। इससे ज्यादा डेटा यदि है देन वी विल हैव टू सी द अदर ऑप्शन, राइट? सो दैट ऑप्शन इज योर पावर पाइवेट. Now what I'll do, I'll upload data in Power Pivot module where and the same data set जिसमें कि 20 lakhs rows था, right? And then we'll create quickly a pivot table using that data from Power Pivot module. So to go in Power Pivot module, just click on Manage, right? This is a data modeling feature, and that has been carried from Power BI directly. मैनेज पे क्लिक करेंगे, then here this is your Power Pivot module. In Power Pivot module, even you can pick data from SQL Server, right, or other databases. And here we have the, even you can just get data from OD data feed, and also you can just get data from these different sources, right? Microsoft SQL, Azure, Microsoft Analytics, and platform Access, Oracle, right? Teradata, Sybase, DB2. So there are lots of features available here. There are lots of options available here from there. Even you can pick data. Right now I'm just going to upload data from text file, and then I'll just click next. जैसे हम इसे next करेंगे, then this will come here, and I'll have to just pass here the path of my data file. I'll go and then I'll go to D drive, then class file. I'll go to this. Then here we have the power data file, that is a CSV file. यहाँ पे only because हमने text file select किया था, so that's why only here we have text file. text files थी जो इस folder में है वही हमें दिख रहा है, जो Excel files है वो नहीं दिख रहा है. And even here you can see that is a flat file. I'll click OK, and now this will start loading in Power Pivot module. This is Power Pivot's table import wizard. Here it has by default checked use first row as column header, and now it has successfully selected this one. I'll click finish, and that's it. Now it has started importing the data from that flat file in Power Pivot module. It has total 20 lakhs rows. That's why it will take some time to load. Once this will finish, right, then only one item is remaining. Now it has imported all the rows, right? Then I click close. जैसे हम close करेंगे, now here this is your Power Pivot module. Here we have two part. One is your data part, and second one is your measure. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, summarized information create कर सकते हैं similar to Excel, right? यहाँ पे यदि हमें aggregated value चाहिए, then here we can create the measure, and this is your कॉलम पार्ट. हियर दिस इज योर डेटा पार्ट. यहाँ पे हम कंप्यूटर कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, एडिशनल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं एज पर यूजिंग डैक्स फंक्शन एंड ऑल. सपोज हमें यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं, और सपोज अमाउंट है, सो इन दीज ऑल अमाउंट्स विल हैव टू इंक्रीज 10%, right? This amount I just wanted to increase the same these amount by 10%. So for that I'll use equal to, then I'll pass
the difference of this, then I'll say plus, then again I'll pass the difference of this here, and then I'll say into, and because हम इसको 10% से increase करना है, so 10% is, that is 0.01, and that's it. I'll just press enter. जैसे हम enter press करेंगे, here you can see that the here rule will start running. Now जैसे ही ये finish होगा, all the value, all the जो हमने formula लगाया है, this will be applied on all the rows in this area, right? Here we can see जो 10% है, जितने भी हमारे पास ये थे, इस सब पे ये लग गया है. Sorry, it's 10%, not 1%. I'll just apply this again. Again, this will start running. And this will take some time to complete. Now it's done. अब हम इसके कॉलम का नेम भी दे देंगे. I'll say new amount. New amount, right? Then here we have the region, category, sales date. इसको हम एक नेम देते हैं, that can be product ID, product ID, right? So in this way, what we can do, we can just upload data in Power Pivot, and then जो भी हमें डेटा मॉडलिंग करनी है, सपोज कंप्यूटर कॉलम में क्रिएट करना है, और ऑल, आफ्टर once our task is complete, then here we can create, click on pivot table, right? And जैसे आप pivot table create करोगे, this will again move you back in Excel. Then here we can create pivot table. I'll just see the existing sheet, and then I'll use this sheet only, sheet 5, and then A1. I'll click OK, and then that's it. Now here we have power pivot table analyze, and from here we can use the fields. जो power pivot के अंदर जितने fields हमने load किए थे, all fields are available here, and using these fields we can now create the pivot table. And for now I'll just remove this, then I'll pick category, then I'll say amount is here, and because this is a big file, right, so that's why it is taking more time to load. And also here we have region. So in this way, what we can do, even from big file, with the help of Power Pivot module, we can load that, then create computed columns, and here we can again return back summarized information in Excel for our analysis and all. Now let's move to, let me just save this and close, and we'll see how in Power Pivot module we can upload multiple files and create relationships. And that will be the last topic for today. So let me just save this first. Oh, 17 हेलो 01. तो घर, ठीक है यार, मेरा लैपटॉप करवा दो यार, मैंने तुम्हें कब से बोला हुआ है। घर पे ही रहता है भाई, लैपटॉप तो घर पे ही रहता है।
ये बंद ही नहीं कर रहा यार, आज कुछ समझ में आ नहीं रहा, ये पढ़ाई जा रहा है। समझ में आएगा कैसे जब चला प्रैक्टिस करने को ही नहीं, इतना महीने 1 महीने ज्यादा हो गया कोर्स करते हैं। इतना ज्यादा करवा जा रहा है वो, हद से ज्यादा। मैं समझ नहीं पाती बिना प्रैक्टिस के पढ़ेंगे पर सुनते रहो। बाकी फीलिंग की भी रिकॉर्डिंग डिलीट हो रही है पर। Okay, so now let's move to next part. So here what I'm going to do, here we have some Power Pivot data, right? And here we have three data sets. वो कर One दिया मैंने, is तुमको सेव कर दी। cookies, custom and orders, right? 11 बजा So दिया। I'll just कल दिन use, से। I'll open the new Excel sheet, right? And in this Excel sheet, I'm just going to use, so in this I'll go to quickly go to my PowerPad module, and then जो तीन data file है उनको हम quickly load करेंगे, right? And then here we'll see how we can use the DAX function, basic DAX function हम use करेंगे इसमें, and then I'll go to data. Here we have three data, one by one इसे हम load करना पड़ेगा. I'll just say use first row as header, then next, and then finish. Then again I'll go in this from other sources, दूसरा excel file है उसे भी load करेंगे, and then third excel file also will load. Go here, then customers, use header here, then next, then I'll say finish, and then that's it. Then next here we have, I'll upload orders, and then that's it. Now also I'll use it next and finish. I have to select one table and finish. Now हमने क्या किया, तीनों जो हमारे पास tables थे, we have just loaded this. Now what I want, इसमें total जो different product है उसमें total unit sold है. My requirement is to, ये जो unit sold से हमारा जो total revenue generate हुआ, total amount आया, I just wanted to calculate that. So I'll go to cookie type. Here we have कुकी, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है, डिफरेंट कुकीज है, उसका प्राइस है, राइट? एंड ऑर्डर्स में यूनिट है. सो आई जस्ट वांटेड टू गेट द टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू इज 5, यानी कि एक कुकी को हमें बेचना है 5 पे. सो आई जस्ट गो हियर, देन आई यूज इक्वल टू, एंड देन आई से हियर इन in Power BI, in this here, there is a DAX function that is related, right? Related to pick data from related column from other table, right? So for that here I'll use related, then I'll go in this cookies type, and I'll say revenue here, right? And then I'll multiply this with quantity जो इसके अंदर है उससे. Then I'll press enter. जैसे हमने इसमें enter किया, now here we are seeing error. Error because ये जो तीनों tables हैं, these all tables
tables are independent. So here what we need to do, here we need to create a relationship between these tables so that we can apply the DAX function or get data from other tables also. So for that, right now this is in data view. I'll just go to diagram view. Diagram view पे जाना है हमें. Then in diagram view, जो भी आपने फाइल्स यहाँ पे लोड किया है, all three files are available, right? अब हमें यहाँ पे इनके आप इनमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है एज पर रिलेटेड कॉलम, राइट? सो कुकीज का कुकी टाइप is product of this order table. So I'll just make this and drag here, drop here, and then create relationship is created to one to many. Single item इसका जो है that is related to many item of this. Then next customer का customer ID and orders का this both are same. So I'll just get this, and then I'll create a relationship in it. Now relationship is created here. Then just go to data view again. We'll click on this. इनिशियली जब हमने इसमें लगाया था रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड एक्स फंक्शन, तो यहाँ पे एरर रिटर्न हो रहा था. बट जैसे ही हमने यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया, नाउ हियर वी आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू. सो दिस इज योर टोटल revenue, right? Total just pick. Then यदि हमें इसी तरीके से सिमिलरली यदि हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल कॉस्ट क्या है इसका, राइट? सो फॉर दैट आई जस्ट गो हियर एंड देन create one more column, right? And I'll say total cost, and total cost के लिए again I'll use the same DAX function that is related. इनिशियली जब हम रिलेटेड फंक्शन यूज कर रहे थे तो यहाँ पे कोई भी अदर टेबल का इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा था, बट नाउ हियर वी कैन सी दैट जैसे हमने रिलेटेड फंक्शन यूज किया, नाउ हियर वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ अदर टेबल्स टू. देन आई पिक दिस फील्ड, then I'll multiply this with unit sold, right? And then this will give you the total cost, right? So in this way, now here we have created a data model. Now I just wanted here the customer name also, right? Customer ID यहाँ पे है, customer ID के basis पे यहाँ पे हमें customer name भी लाना है इस sheet से. So for that also, here I'll go here, then I'll press equal to, I'll use related function, and then I'll go to customers information and customer name, and that's it. So in this way, we can use Power Pivot module where we can create, uh, perform the data modeling activity using simple DAX functions. And जब हमारा data modeling activity complete हो जाएगा, then we can create the pivot table. We can remove, return the same in Excel. अब ये जो तीनों tables हैं उनका सारा का सारा columns available है यहाँ पे, and using these we can create the pivot table as per our requirement. Suppose the different products हैं, उसके total revenue क्या है, cost क्या है, even we can here we can even drive that in this way, right? So this is all about Power Pivot. Power Pivot का जो feature है, you learn in Power BI class in detail, right? So that's it for today, guys. सर नेक्स्ट क्लास में क्या बचा अब?